Good evening once again, and welcome you all to today's mastermind. And first of all, I would like to begin with thanking Amit for giving me this opportunity to be on his platform and uh, bring out something completely fresh for you all. Right? अब तक तो काफी सारे सेशंस आपने मेरा अटेंड किया है in Miracle Morning and in Wealth Mastery Club. But this is one of the forte which I also have. So I thought, okay, let it be something new which I can give you all. So that the time which you are spending with us over here, it should be valuable and there should be some takeaway, right? So just let me share my screen. I hope it is visible to all. It's visible. Great. Thank you, sir. Thank you so much. So today we are here to talk about 5 love languages. Now, when we say this, the basic of love is relationship, right? The root is. All I want to know is before I go ahead and share my views on this topic, I would like to know from you all कि आपके life में what do you understand by relationship? Relationship का मतलब क्या है? Yes, Kamna ma'am, Subramanian sir. Do be whatever you feel like sharing, you can. Very difficult to define Rekha ji relationship, but Simple. English language में relationship का मतलब क्या है? वो बता दीजिए. चलिए, I'll make it little easier for you. My understanding is that feeling with love and affection and your understanding with the intimacy. Awesome. So these are the essential aspect of the relationship, and if these are clubbed, then the relationship is established. Yes. Great. Thank you, ma'am. Thank you so much for sharing that. Yes, Subramanian sir, would you like to say something? Same ऐसा कामना मैडम बोली understanding partner and love and affection with the near and dear. Great. Thank you, sir. Thank you so much. Sita ma'am, would you like to say something? आप कुछ कहना चाहती हैं? आप relationship का मतलब आप क्या समझते हो? कुछ बताना चाहते हैं? हाँ. जो अपनापन होता है. Okay. Thank you, ma'am. Thank you. Rajiv sir, would you like to say what is the definition of relationship in your life? Certainly, ma'am. Well, I will define it as the gravitational pull between two hearts. Okay. Okay. Thank you, sir. Meena ma'am, आप बताना चाहेंगी? आप what do you understand by relationship? Okay. So, आप सबने सही बोला. Whatever you have shared is completely fine. A relationship is nothing but a state of being connected, a state of being related emotionally with love, that mutual respect, everything comes under that, right? So it could be, when we say relation, it could be a blood relation, it could be non-blood relation also, like husband and wife, employer, employee, students, teachers. So all the things comes, but somewhere there is a common thing which connects us. So basically it is a connection between two people, right? Now, why relation? हमें क्यों चाहिए ये relation? It's because we need social interaction, fear of loneliness, insecurity, right? And then social convention, जो tradition हमारा आता जा रहा है. So we are bound to be in that relation, right? क्यों? क्योंकि हमारे घर में ऐसे ही रहा है, हमारे दादा दादी ने ऐसे किया है, हमारे पेरेंट्स ने ऐसे किया है. So we have to follow our tradition, we have to follow our customs, right? Validation,
very important. It's our human nature, psychologically हमें ना, हम कुछ भी करते हैं, we need that validation from other people. हमें चाहिए रहता है, oh yes, you're doing good. वैलिडेशन हर चीज में हमें, छोटी छोटी चीजों में अगर आप अपने आप को नोटिस करेंगे ना, you need that validation at every point of time, right? Social identity, that's a social identity because we have been conditioned in that way. Status, हम शादी करते हैं, क्यों करते हैं? दुनिया को दिखाने के लिए, हाँ भाई मैं भी शादीशुदा हूँ. अच्छा शादी नहीं कर रहे हो? Oh my God, इतने एज हो गए हैं, you are still not married. How come this is possible? Just to avoid these questions, we get married, right? Because that gives us that social identity, that status. Look, I'm married to this person. Look, he is my husband, she is my wife. Status, अपना status दिखाने के लिए, right? Love, belonging, emotions. Out of love, we do it. And then intimacy. So these are few of the basic reasons why we get into a relationship. Now, let us understand about the nature. कहाँ से ये relationship की शुरुआत हुई थी? Before getting into anything, we should know the root. So a little brief on that point. Starting में कैसे रहा? There are two basic natures. I have divided it. One is, I don't say men are like this or women are like this. It is just the basic understanding through which I have diversified because of the nature. Okay. So क्या होता था पहले जमाने में? Ladies घर में रहती थी and men used to go out to arrange the resources. मतलब कमाने के लिए जाते, ठीक है? And whereas वो जो कमा के लाते थे, उसको घर में वो लेडीज उसको संभालती थी, राइट? सो क्या होता है, बाहर ही रहना रहता है एंड उनका द मेन मोटो ऑफ द पर्सन इज टू अर्न मनी. सो वो क्या है, वो एक बहुत ज्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते. मेन आर वेरी लेस एक्सप्रेसिव. वेरी रेयरली यू विल फाइंड men who are very expressive, right? Now, when it comes to type 2 or women, it happens that because they are in the family, वो क्योंकि घर में लोगों के बीच में रहते हैं, they are very expressive. क्यों? क्योंकि उनको घर संभालना पड़ता है, घर में जो भी रहते हैं, सास ससुर माँ बाप siblings, children, whoever it is, they have to interact more. Because of which they are by nature more expressive. That is why हम common में भी कई बार बोलते हैं ना, अरे they are not expressive men, वो नहीं बताते हैं अपनी चीजें, वो अपनी चीजें छुपा के रखते हैं. Please understand, it is a basic nature, right? And क्योंकि उनका बाहर बाहर रहता है and they are not much involved in one particular into the family, they avoid commitments. Whereas, since it is a woman who takes care of the family, who has the primary duty of taking care of the other members in the family, they are highly committed. And because they are highly committed, they also expect the same thing from the other person. So, their commitment level, they always seek commitments highly, right? Now, men, when it comes to judgment, they always have the fear of judgment. Oh my God, पता नहीं मुझे क्या सोचेंगे, मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, like that. And in case of women, it happens that they are always having the fear of rejection. अरे मैं खाना तो बना रही हूँ, क्या हुआ अगर किसी को पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूं? मेरे कपड़े अगर किसी को पसंद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं? Even those, why I'm taking such simple examples are, even those small things, we have it in mind. हमें लगता है कि ये तो छोटी सी बात है. But these all things later on takes us to a different level, right? So this is the basic nature of a person. और ये
पुराने जमाने से ही चला आ रहा है। नाउ जब दो डिफरेंट काइंड ऑफ नेचर के लोग मिलते हैं आपस में, देयर इज ऑलवेज कॉन्फ्लिक्ट, राइट? It's not necessary. Please keep it in mind that I'm not only talking about a husband-wife relationship. I'm not talking about a couple relationship. A relationship can be anything and everything, and these all facts are applicable and can be implemented in all the relationships. ये हर रिलेशन में आप देखोगे यही होगा, एंड हर रिलेशन में जो भी मैं बता रही हूँ वो सारी चीजें आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि सिर्फ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में ही करना है। कॉन्फ्लिक्ट्स कहाँ कहाँ आता है? एक्सेप्टेंस, हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं द पर्सन एज दे आर, राइट? लैक ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे को हम रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं करते हैं। हमें लगता है कि सामने वाले समझ जाएगा, एंड इंस्टेड ऑफ कम्युनिकेटिंग इट प्रॉपरली हम ये उस इंसान से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बंदा तो समझ जाना चाहिए, वो मेरी वाइफ है ना, उसको पता होगा। अरे कैसे पता होगा? आप मुंह खोल के बोले हो, आपने उनको बताया है, तब उनको पता चलेगा ना। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट इन ब्लेमिंग देम लेटर कि वो तो समझती ही नहीं है या वो तो समझते ही नहीं है मुझे। लैक ऑफ ट्रस्ट, छोटी छोटी बातों में भी अगर ट्रस्ट नहीं रहे ना, देयर कुड बी अ ह्यूज कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि we say that trust is the root of any relationship, right? Dominance, अगर हस्बैंड ज्यादा डोमिनेटिंग है तो वाइफ अगर शांत है तो वहां अगेन प्रॉब्लम होगी, और इट कैन बी वाइस वर्सा। इफ अ वाइफ इज डोमिनेंट एंड द हस्बैंड इज नॉट, अगेन देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट एंड इनसिक्योरिटी बढ़ता है उससे। फैमिली एंड पेरेंट्स इश्यू, जहां पे देयर इज अ थर्ड पर्सन इन्वॉल्व्ड, तो वहां पे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं। अब्यूज, ये सबसे बड़ा रीजन है आज के डेट में भी। there are lot of cases where this is one of the major reason why women are suffering. I won't say just the women, there are few men who are also suffering, who also go through this. lack of love, बोलते हैं कि respect, trust, love, these are the roots for a relationship. वो जो हम प्लांट लगाते हैं, बीज डालते हैं ना, तो रिलेशनशिप के बीज में वी शुड पुट ऑल दीज थिंग्स। अगर इनमें से कोई एक भी चीज एब्सेंट हो ना, दैट रिलेशनशिप कैन नॉट बी पीसफुल और प्लेजेंट। एंड वहां तो लव तो चाहिए ही चाहिए, लाइक वी ब्रीथ ऑक्सीजन, तो एक रिलेशनशिप का ऑक्सीजन इज लव, एंड इफ इट वोंट बी देयर, बहुत मुश्किल है। कल्चरल लाइफस्टाइल डिफरेंसेस, today love marriage is something which has become very common, right? And wahan pe when there are two different people coming from two different culture or two different lifestyle completely, ek gaon mein rehne wala banda hai and ek shehar ke bande hain, definitely there will be differences. Is wajah se bhi there are people who are not able to handle this, not able to overcome this, because of which they end up in divorce. Intimacy problem in case of couples, it is because one is more expressive and the other is not expressive, तो यहाँ पे ये problem आते हैं। Another major issue is money, सबसे बड़ा problem, वाइफ हाउसवाइफ है, हस्बैंड कमाते हैं, तुझे नहीं पता कितनी मुश्किल होती है पैसे कमा के लाने में, तुम तो बस घर में बैठ के आराम करते हो, राइट? बस पैसे उड़ाते हो, तुझे क्या पता मैं कितना कमा के मुश्किल से कमा के आता हूँ, मुझे कितना काम करना पड़ता है ऑफिस में। इट इज बिकॉज देयर इज नो बैलेंस, देयर इज नो प्रॉपर एजुकेशन, इट्स लैक ऑफ अवेयरनेस, and this money issue comes in all the relationship.
नॉट ओनली जस्ट हस्बैंड वाइफ, भाई भाई में झगड़े होते हैं, सिबलिंग्स में होते हैं, पेरेंट्स में होते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं देखो अब शादी हो गई है ना, तो आज मेरा बेटा मेरा ध्यान नहीं रखता है, मुझे नहीं पूछता है, मेरे लिए खर्चा नहीं करता है, राइट? तो money issue is one thing which is very common and which we can find it in all the relationship. Inability to handle their own emotions, another reason. मुझे frustration है, ऑफिस का टेंशन है, वो मैं लेके घर पे जाऊं और वो आउटकम होता है बीवी बच्चे पर. Why? Because that person is not able to handle his own emotions. उनको ये समझ में आना चाहिए, ये मेरा ऑफिस का टेंशन है, आई विल लीव इट आउटसाइड माई डोर एंड देन आई विल गो इनसाइड एंड गेट इनटू माय फैमिली लाइफ. नहीं, ये बहुत प्रॉब्लम करता है छोटी छोटी बातों का. पास्ट बैगेज, पुराना जमाने में कभी मेरे साथ कुछ हुआ. When I was a teenager, I had a love failure. So today I can't make up with my wife. वाइफ के साथ मेरी स्मूथ रिलेशन नहीं हो सकती है. क्यों? That person has a insecurity कि उसकी गर्लफ्रेंड ने जैसे उसको छोड़ के गया वैसे ही उसकी वाइफ भी चले जाएगी. Now because of that insecurity वो एक प्रॉपर रिलेशन नहीं बना पा रहा है. Childhood trauma, I don't have to explain, you all know very well, right? Lots of things, abuse, molestation, lots of things happens, and which is something which we need lot of time to overcome it. काफी लोगों को ये भी नहीं पता रहता है कि वो एक particular incident था which is impacting their current life now. And in counseling, we use lots of tools and therapies because of which we made them understand it is not because what you are now, but it is because what you are carrying from your past. Right? And believe me, 80% cases यही रहता है. Influence of others' experience. My mother and father, they had a divorce. So I can't trust, I don't believe in marriage. So I don't want to get married. My sibling had an abusive marriage. I don't want to get married. या फिर ओ माय गॉड, मेरे फ्रेंड की तो यार हस्बैंड तो रोज उसको गिफ्ट लाके देता है, रोज उसको रोज लाता है, मेरा हस्बैंड नहीं लेके आता है. You know, all these reasons में प्रॉब्लम हमारे अंदर रहता है, but we don't realize it or we are not able to understand it. And because of these things, conflicts raise होते हैं. Employer employee में वही problems होते हैं. Emotions को लेके, बॉस को उसके बॉस से गाली पड़ी, वो डाउनलोड कर रहा है अपने एम्प्लॉय को, अपने जूनियर्स को, just because he is not able to handle his own emotions. Right? अच्छा, उसको तो हाइक मिला, उसको तो बोनस मिला, मुझे नहीं मिल रहा है. अरे उसकी तरह आप परफॉर्म करो, काम करो, तो you will also get it. Right? So there are a lot of conflicts. Reasons basically यही होते हैं. And let me tell you, out of all these reasons also, there are only 3 major reasons जिसके वजह से हर relation में there is a conflict. The first is the communication. सबसे बड़ा problem. हम बिना बोले ही we expect the other person to understand us. Just because he is my husband or you know they are my parents, he is my children, तो वो उसको समझ में आना चाहिए. आप बोलोगे तब ना समझ में आएगा. Second is money. As I said, हर रिलेशन में इश्यू रहता है, राइट? फ्रेंड ने पैसे लिया, वापस नहीं दिया, फ्रेंडशिप खत्म. Third comes intimacy. Intimacy is very particularly to the couples, but otherwise ये दो problems जो है वो common रहता है हर relationship, right? Now, how do we overcome this? I'm not going very deep. It's just an overview I'm giving. So
when we know the other person, it becomes easy for us. If we understand the nature of the person, it becomes easy for us to accept the person as they are, and it becomes easy for us to deal with them. वो जैसे हैं हम उस तरह से accept कर लें. हाँ भाई, उनकी नेचर ऐसी ही है. मेरे हस्बैंड कम बोलते हैं, तो it is his nature. I'm okay with it. मुझे फिर ये कंप्लेन नहीं होना चाहिए कि अरे वो कम क्यों बोलते हैं, right? So let us find out few basic things because of which we can understand a person. Here I have said, although a partner, it is for every relation, right? The world's happiest couple never has the same character. They just have the best understanding of their differences. This is a quote which I found. I said something which I liked it like anything, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ डालना चाहिए. It is particularly for the couple. Definitely when two different peoples comes together, they don't have a similar this thing, but they accept, they understand both each other's differences, and that is when a beautiful relationship happens, right? Now let us go and see what are those 5 things through which we can understand a person's nature, right? So this 5 things has been derived from the book 5 Love Languages by Gary Chapman. Okay, although he has mentioned in this book based on a couples or a marriage, एक marriage में एक couples का क्या क्या होना चाहिए उसके base में उन्होंने बताया है, but believe me, these things you can implement with all the relationship, with your parents, with your employee, with your children, with your siblings, anyone, हर किसी के लिए ये implement आप कर सकते हो. So the first thing is words of affirmation. Words of affirmation का मतलब है यहाँ पर वो affirmations नहीं है जो हम daily practice करते हैं, right? क्या होता है ना, there are people जिनको आप जब बोलते हो ना तो उनको समझ में आता है. Let us take an example. Wife चाय बना के लाके देती है. Wife का nature ये है, she expects the husband to tell her कि wow, thank you so much, you made the tea for me. But husband का nature क्या है? Since it's his nature to be less expressive, okay, this time I wanted tea and I got a cup of tea and it is very good. वो जो है अपने मन में बोल के चाय पी लिए, कप रख के निकल लिए. What will happen? Conflict, right? तो यहाँ पर if the husband is able to understand, no, my wife needs that verbal appreciation, verbal encouragement, तो वहां पे उनको एटलीस्ट अगर वो ये बोल दे कि थैंक यू सो मच, यू टुक ऑल द एफर्ट टू मेक अ कप ऑफ टी फॉर मी, तो वाइफ भी खुश, हस्बैंड भी खुश, नो कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट? सो वर्ड ऑफ अफर्मेशन मीन्स एप्रिसिएशन, एनकरेजमेंट. बच्चा खेल के आता है and he's so excited to come and share with you कि देखो पापा मैंने ना आज इतने रन्स बनाया, and वो बोल के भी जाता है, and he expects a pat on his shoulder, a simple action. but हम क्या करते हैं? कुछ नहीं करते हैं. हाँ ठीक है. बच्चा क्या होगा? अपसेट हो जाएगा. he feel that ignorance, and ये एक छोटा सा एक्ट आपका जो है ना, it keeps on his mind. फिर वो क्या करेगा ना, धीरे धीरे बोलना ही बंद कर देगा. He will stop sharing. फिर बड़ा हो जाएगा, you will have a complaint कि अरे मेरा बच्चा ना मेरे साथ कुछ शेयर नहीं करता है. Always try and understand the nature of the person, the way they wanted to be loved. Remember, it's not about you. आपके बारे में नहीं है. It is about the other person. How the other person wants that love from you. Simple. Pat करो, बोलो well done my boy. खत्म. He is also done. And वो एक word उसको इतना confidence देगा, he will be encouraged to perform better and better. Remember, जब भी हम किसी को appreciate करते हैं ना, it is the human psychology that makes them to do more and more.
right? So words of affirmation is appreciation, encouragement you have to give. Second is the quality time. घर में सब है, पापा टीवी देख रहे हैं, बच्चा फोन में बिजी है, मम्मी किचन में बिजी है, and we say that, oh, we spend time together at home. Do you think it is a quality time? No, definitely not. Quality time का मतलब होता है कुछ नहीं करो, साथ में बैठो, कुछ भी बातें करो, गेम खेलो. That is quality time. Husband wife साथ में बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, लेकिन बातें भी कर रहे हैं. बातें किसकी कर रहे हैं? पूरा दुनिया का बात कर रहे हैं. You know what happened? उसने उसके बेटे के ना ऐसे हुआ था. You know what happened? Oh my God, मेरी सिस्टर ना आज ये की थी, वो की थी, आज मेरे ऑफिस में ऐसा हुआ था, आज मेड ने ये नहीं किया. Do you think it was a quality time? No. Conversation हो रहा है, but आपके बारे में नहीं हो रहा है. A conversation has to happen just about you two people. आप कुछ मत करो, साथ में बैठो, अपने बारे में बात करो. Plan your future, discuss about it, discuss about how was your day, what do you want to achieve in life. That is quality time, right? Receiving gifts. कुछ लोगों का नेचर ये होता है, आप कितना भी अप्रिशिएट कर दो, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर दो, फिर भी they are not of that energy, because their nature is, जब आप उनको एक छोटी सी भी गिफ्ट देते हो तो they are motivated, right? तो यहाँ पे गिफ्ट्स का मतलब जरूरी नहीं है कि एवरीडे यू हैव टू ब्रिंग अ ज्वेलरी, कार, बड़ी बड़ी चीजें नहीं. स्मॉल स्मॉल थिंग्स, just a token of appreciation. Say suppose your husband remembers your birthday and फिर एक बुके लाके देते हैं, right? In return आप एक छोटा सा गिफ्ट उनको दे दो, या वाइफ को अप्रिशिएट करने के लिए. जरूरी नहीं है कि it has to be your birthday or her birthday or your anniversary तब हम गिफ्ट देंगे, या कोई फेस्टिवल्स हो. Not necessary, no. You can always, gifts can be, मैं बता रही हूँ कैसे होता है. Recently I started practicing this. रोज मैं अमित का टिफिन बनाती हूँ, and you know what? I keep a small note. उनके टिफिन के अंदर एक एक्स्ट्रा बॉक्स रखती हूँ, उसमें मैं एक छोटे से नोट, कुछ नहीं रहता ना लिखने को. I say thank you so much for all the things you do for me. Sometimes I also write that I love you. That's it. And I also ensure that my son also writes at the back of the chit and we keep it. पहला 2-4 दिन तो अमित को पता ही नहीं चलता था. पहला दिन तो he was super surprised, क्योंकि वो उन्होंने वो चीज एक्सपेक्ट ही नहीं किया था. सेकेंड डे, अच्छा फर्स्ट डे हुआ, उनको लगा चलो एक ही दिन मिला है, राइट? सेकेंड डे he was like wow. थर्ड डे, फोर्थ डे जब हम कंटिन्यू करने लगे, उनको रोज बहुत अच्छा लगता था. And then what he used to do is he used to click a pic of that जब वो लंच कर रहे हैं, and then he used to say love you too beta or like that. एक दिन क्या हुआ ना, बहुत जल्दी जल्दी में मैंने टिफिन पैक किया and I skipped it. मैं भूल गई थी, भूली नहीं थी, करेंगे करेंगे सोच के. अमित भी निकल गए, मैं भी काम में रह गई. He called me up after opening the lunch box. He said today there is no chit. चिट नहीं रखा आज. मैं कहा आज एक दिन नहीं रखा क्योंकि I was also occupied, तुम भी हड़बड़ी में निकल गए तो I couldn't. So what I did was, मुझे भी बुरा लगा कि अरे यार उसकी एक्सपेक्टेशन है और मैंने नहीं किया. तो मैंने क्या किया ना, I just text him that thank you so much, I love you, I'm sorry for today. उतना करके मैंने भेज दिया. तो his day is also made, my day is also made. So gifts का मतलब जरूरी नहीं कि materialistic हो. It can be small things, right? This also comes in act of service, what we say, what I just explained. This is my personal experience. अगर हम खुशी से अपने मन से किसी के लिए खाना बनाते हैं, और we do anything, just clean up the room for that person, है ना?
कभी अपने पेरेंट्स को सरप्राइज करके उनको विजिट करो, इवन दैट इज एन एक्ट ऑफ सर्विस. You always find कि they very happily excitedly receive you, right? जब आप उनसे मिलने जाते हो. मेरे मम्मी पापा तो बहुत खुश होते थे. My father used to, literally उनको जब हम कॉल करते थे, every weekend he used to wait for us. Saturday सुबह हो गया, मतलब अब तो आना ही है इनको. And he used to keep the door open and sit on right in front of the door and wait for us. And the moment he hear us climbing, he used to be so happy, so excited, And every week हम लोग जाते थे. Believe me, मैं कभी-कभी हफ्ते में 2-3 बार भी चले जाती थी. Every time I find the same excitement in his face. तो ये छोटी-छोटी खुशियां जो हम देते हैं ना, वो अपना रिलेशन को बहुत स्ट्रेंथन बनाता है. That helps us to bond better, to understand each other better, right? And then there are few people who feels like वो touch पे believe करते हैं. मतलब कुछ लोगों को हमने देखा होगा, in general आदत होती है छू छू के बात करने का, वो बिना टच के बात ही नहीं कर सकते. And the moment you go, they greet you with a hug. आपको बुरा लग रहा होगा, अरे यार ये तो लड़की है, आके मेरे को ऐसे हक कर ली. Don't mistaken them, because it is their nature. They feel good when they are being touched. Touch in the sense, it could be cuddling, it could be hugging, right? Or just holding hand. उनको वही भाषा समझ में आता है. Otherwise, जिनको इन पांचों में जो समझ में आता है, you have to talk to them in the same language. Just imagine, if you go and meet a foreigner and that person does not talk to you in English, how will you communicate? वो फ्रेंच बोल रहा है, आप इंग्लिश बोल रहे हो. Will there be a match? No. There has to be a common language. Right? So similarly, these are the 5 languages you need to understand. हर किसी का ये पांचों नहीं होगा. इनमें से कोई एक या 2 हो सकता है. Right? So for a better relation, for a better bonding, you need to have that. You need to understand the nature. You need to understand their language of love. आप सामने वाले का लैंग्वेज जानोगे तो आप बोल सकते. See, today being a South Indian, I know Hindi and English. That is why I am able to communicate. अगर मैं अभी तमिल में बोलते रहूंगी, क्या आपको कुछ समझ में आएगा? No, you feel like कुछ तो बोल के जा रही है, जाने दो. Right? It is equally the same thing. If you don't understand the other person's language, love language, how they want to be treated, always remember, it's not about you. आप कैसे करना चाहते हो, नहीं. How the other person wants, that matters. Right? So these are the things. Now with this, I would like to share a compatibility test, which you can take it. It's a PDF form. I'll just share it in the chat box. You can do it later. It's a self-explanatory one. ज़्यादा नहीं है, 20-25 questions है. आप खुद भी कर सकते हो, अपने spouse से भी करा सकते हैं. 1 second. Pretty sure all of them are with us. Was this good? Yeah. Have you all got it? किसमें? Chat box में मिल गया. मिला? तो उसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिए. Later on, you can do it. लेकिन करके बैठना नहीं है. You have to share it with me. You all have my personal number, right? And those who don't have, I put my number. क्या इसमें स्कोर मिलता है क्या? और उसमें रहता है कि depending on the options you choose it, वो बताएगा. I'll just share it and show it to you. 1 second. I could not see रेखा जी कहाँ पे शेयर किया है. Chat box में मैम, chat box में मैडम. मैरिज चैट बॉक्स ओपन करते हैं. हाँ, वहां पर देखिए
वहाँ PDF फाइल है। Chat box. Chat box empty है मैम। नहीं नहीं दिख रहा है नहीं देखो। हाँ विजय प्रकाश जी, it is, अच्छा, हाँ, 1 second, see, I'm you just can sharing see it, it. 1 second. It is some पहले मैं small दिखा file, देती हूँ how it is. 46 MB का है। Yeah, can you all see this in my Yes, screen? yes. yes, ठीक है, so this is the Screen options में- है. Okay. हाँ पर All ये of you chat can box see this, right? तो दिखाई नहीं दे रहा चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में मैं फिर से शेयर करती हूँ मैम, ये अभी स्क्रीन में विजिबल है हाँ स्क्रीन Yes. पे विजिबल फॉर है। Yes. एवरी इनमें भी- क्वेश्चन. लेट मी Even जस्ट इसमें chat box में है, मैं already downloaded. I'll मैं share it. क्या I'll करती share हूँ? it personally also if you don't हाँ get it. मैं सुब्रमण्यम जी आप WhatsApp पे शेयर शेयर कर करती दीजिए। हूँ. I Yes. will share in the नहीं, WhatsApp. उसमें I'll मत share in करिए, the WhatsApp. पर्सनल में कीजिएगा, नॉट इन द ग्रुप. पर्सनल में कर दीजिए। हाँ ठीक है। हाँ, because those people who are not attending this session, they will be wondering कि what is this. And it will affect the relationship also. Yes, this will affect the relationship also. So, keep our relationship intact. Yes. yeah. So, every question has 5 options. So, you need to choose whatever it is. You will find the questions might be very silly, but take the test, है ना? वो करके do it in a white paper and there are results also. पहले आप लोग results मत देखना, ठीक है? पहले आप लोग करना, फिर उसके बाद results देखना, and do share it with me. Do it in a white sheet. आप लोग करने के बाद ना just click a pic of that and share it with me in my personal WhatsApp. Okay. I will once again share the file. यहाँ पर if you can download it, that would be great. अगर नहीं कर पाते हैं, doesn't matter. मैं फिर से इधर या कहाँ गया? Okay. No, I'm not over it. Stop recording. Okay, I've given my number also. Now, just one small thing which I would like to share before I finish it. I would like to end today's session with a lovely quote that expressing love in the right language. We tend to speak our own love language to express love to others in a language that would make us feel loved. But if it is not his or her primary language, it will not mean to them what it means to us. So always remember, when it comes to expressing your love to the other person, it should always be on the other person's language and not your language, right? Thank you so much for patiently listening to me. I hope I'm able to justify your time. Now, I would like to know a few feedback from the people who are attending it since beginning. Yes, over to you, Amit. Before Amit ji starts, I would just compliment to Amit ji only. Today is his day. The whole day he enjoyed in the picnic, and the Rekha ji, in all the examples he has quoted Amit ji. So Amit ji, you are lucky. It is your day today, and we could very well understood the relationship importance and the how it is to be made and how it is to be maintained. So nevertheless, Rekha ji, it was we have really an in-house इतना excellent. talent है. Yes. In-house Thank you, in-house thank इतना you. talent है. We are not utilizing. No, talent के अलावा क्या, that seems like they both are complementary and supplementary to each other. Touch wood, God bless you both. Yes, I wish that should always continue. But definitely it's a good learning. और आप लोगों ने आपने जिस तरह से explain किया है, we all know these are all the integral part of our relation. But क्या होता है, भूल जाते हैं. हस्बैंड नाराज हो गया या वाइफ नाराज हो गए तो ठीक है, बैठे रहो, एक बार बात सुना, कर कोशिश किया, नई बात है, ठीक है, गुस्सा है, होने दो, अपने आप ठीक हो जाएंगे. बट होता क्या है, वो थोड़ा स्ट्रेच हो जाती है वो चीजें. You should avoid it. You have absolutely. Once we have that feeling of love and affection as well as the respect, we should close that unpleasant situation immediately. Yes. So thank you, Rekha ji. You have explained in a very wonderful manner, and it's really,
I can't say anything else except that, yeah, I also learned. I also reminded myself of so many things. Yeah, I should take care. Yes. Thank you. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much for that feedback. Yes, Subramanian sir. Yeah, many things we take it granted. Yeah, but what you won't express. So that is a major problem with the relationship conflicts. तो आपने अच्छा एक्सप्लेन किया है एंड आई फील आप इसका भी बारे में किताब बना सकते हैं. I have to tell you, like, this is one area where I have struggled a lot personally, and that is how, you know, I learned so many things with my learnings in my personal life also. काफी सारी चीजें मुझे realize हुआ as I started learning about this particular thing. So I started correcting it, and karte today I'm at this level. But it's a long journey. It has to be like it's a continuous process, right? So जो भी थोड़ा कुछ मैं share कर सकती थी मैंने किया. Right, as rightly said by Kamna ma'am, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हमें नहीं पता था. Right, it is all that काफी टाइम ना हम ग्रांटेड लेते हैं एंड वी फॉरगेट इट मेनी अ टाइम्स, यू नो. हमें लगता है छोड़ो यार, हस्बैंड तो है, बच्चा तो है, मम्मी तो है, पापा तो है, समझ लेंगे, कर लेंगे, वो तो जानते हैं मेरे बारे में. Like that, you know, we always take our relationship for granted. But remember, the other person also needs that motivation, that encouragement, that appreciation every time. हर दिन वो I love you बोलने की जरूरत है. Not only to your spouse, but also to your children, but also to your parents, you know, to your siblings, everyone. You know, मैं तो अपने friends को भी आजकल I love you बोल देती हूँ. ठीक है. See, it's all like the intention matters, right? So कोई खराब नहीं है किसी को भी बोलने में, right? So thank you so much, sir. Rajiv sir, Sita ma'am, Vijay sir. Yes, ma'am. It's an eye-opening session. It's an eye-opening session for a relationship, and I really enjoyed because many things, like Amna Madam said, I'll say it's a mirror. I see myself and my relationship with my wife, my children, my siblings. Thank you, ma'am. It's a wonderful session. Thank you, sir. सीता मैम, आप कुछ कहना चाहेंगी? Okay, Vijay sir. So thank you, Rekha, for such a wonderful session, and I'm sure everybody enjoyed it. I thoroughly enjoyed. And yes, relationship की मैं क्या बात करूं, मतलब मैं हमेशा ही बोलता हूँ, लाइफ जो है, लाइफ को अगर हम एक गाड़ी मान ले तो इसके 4 इंपॉर्टेंट व्हील्स हैं, दैट इज हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप एंड पीस ऑफ माइंड. सो होता क्या है, लोग सिर्फ एक या दो को ही इंपॉर्टेंस देने लगते हैं, हेल्थ एंड वेल्थ. रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं साइड में लेके चलते हैं, और उसका खामियाजा फिर दूसरे पहिए पर भी पड़ती है, मेंटल पीस पर भी पड़ती है. बट होना ये चाहिए कि ये चारों ही पहिए अलाइंड हो एंड इक्वली इम्पोर्टेंट हो. ठीक है, इक्वली इम्पोर्टेंस दिया जाए. सो रियली मतलब इट वाज एनलाइटेंड, एंड यस, आई एम श्योर हर किसी को यू नो सेशन अच्छा लगा. एट द सेम टाइम टाइम निकाले तो थैंकफुल टू एवरीबडी. एंड मैं एक ही चीज बोलता हूँ, लेट्स कम अप. ये जो कम्युनिटी हमने बनाया है, इस कम्युनिटी को हम और स्ट्रांग बनाएं. ठीक है, और यही मेरी कोशिश है. बट हाँ, वो बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल कितना भी कर ले, जब तक लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा हम लोग इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके नहीं जा सकते. आज आप लोगों के सपोर्ट से हमने मिरेकल मॉर्निंग को खड़ा कर पाए हैं, बट अभी भी हमें लंबा रास्ता तय करना बाकी है. सो ये
मास्टरमाइंड कम्युनिटी को भी हम लोग बड़ा बनाते हैं, ठीक है। आई रिक्वेस्ट एवरीबडी इनवाइट as many people you can, ठीक है। ये तो हमारा कंप्लीटली फ्री सेशन ही रहने वाला है, लाइफ लॉन्ग ये भी फ्री सेशन ही रहने वाला है। एंड द पर्पस इज वेरी क्लियर, टू हियर समवन स्पेशल इन a special mastermind in a new subject, and let learn more, apply more, and make our life, beautiful. So that is the idea, right? So I think already it's 9:10. So here would like to end the session. Still, before we end, अगर आप में से और कोई कुछ बोलना चाहेंगे तो मोस्ट वेलकम। विजय प्रकाश जी, आप कुछ, आप if you are there, want to say something? Actually, I joined just now. Question answer time पे join किया हाँ था. हाँ, आपने लेट I ज्वाइन was किया। not there. So total Correct. session miss हो गया. Only feedbacks that questions session. कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने लास्ट में ज्वाइन तो किया एटलीस्ट। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये रिकॉर्डिंग हमने कर रखा है, इसको हम अपलोड करेंगे, देन ग्रुप में भी शेयर करेंगे। सो मस्ट लिसन, इट्स अ वेरी, listen it, sir. यस, इट वाज अ ग्रेट सेशन, नो डाउट, एंड इट इज फॉर ऑल। इसके लिए मैंने ग्रुप में बोल भी दिया था कि ये सेशन हर किसी के लिए है, राइट? ओके ओके, सो राइट फ्रेंड्स, थैंक यू once again everybody. So see you tomorrow in the morning in Miracle Morning Club. Have a great time. Bye. Take care. Thank you, everyone. Good night. Thank you.